Hey guys, this is Ankit. Welcome to EasLegal channel. So लीगल इश्यूज को हम थोड़ा कम लीगल तरीके से देखेंगे और जो आउट ऑफ लीगल इश्यूज है उसमें उसको हम लीगल एंगल से देखेंगे ताकि बहुत ही इजी और बहुत ही कंफर्टेबल डिस्कशन हम करें इस चैनल में. So about me, I am Ankit. I am a corporate and IPR lawyer, and also with me is my friend Vivek, who is corporate and data privacy lawyer, and who has formerly worked with Cyril Amarchand Mangaldas and Khaitan and Company. So hello Vivek, how are you doing? Hi Ankit, I am fine and I'm really looking forward to this great discussion. Yes, yes, yes. मैं भी बहुत ज़्यादा excited हूँ. So Vivek, data security and data privacy. So exactly, why should startup need to consider data security and privacy laws when they start working on their idea? So Ankit, you're right. Data privacy and data security are like the two buzzwords in the last few years. And if I remember correctly, भाई आखिरी के 2 सालों में सबसे ज्यादा न्यूज इनके बारे में सुना है कि मैरियट होटल का ब्रीच हो गया, फेसबुक का ब्रीच हो गया. फेसबुक का तो आए दिन होता रहता है. गिवन जस्ट द अमाउंट ऑफ न्यूज एंड आउट देयर, यू कैन अज्यूम दैट दिस टॉपिक इज गेनिंग ट्रैक्शन and everyone is paying attention to this. All mature jurisdictions, including our India, is coming up or has already come out with their very extensive laws. So I think it is important for startups कि अब वो भी थोड़ा ध्यान दें अपने इनिशियल स्टेजेस से. So guys, हमारा डिस्कशन इसी तरीके से आगे बढ़ेगा. हम ये देखेंगे कि कैसे ये डेटा सिक्योरिटी लॉज हैं एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप को ध्यान में रखना चाहिए. So welcome all again. So Vivek, first and foremost question is data security and data privacy. Are they same things? Because sometimes people use it interchangeably. Ankit, data privacy and security are not the same thing, although they overlap in some respect. Okay. So I would like to tell you that data security deals with preventing unauthorized access to your data, your database, and like preventing data leaks. And data privacy is giving more control to the information provider, like giving them some rights. So इसको भाई एक simple terms में अगर समझें तो सिक्योरिटी आपके बॉडी का आपका इम्यून सिस्टम है, आपको कोविड से बचा रहा है. बट आपका जो दरवाजा है वो आपका प्राइवेसी है. आप कुछ ही लोगों को अंदर आने देते हो, जो अंदर आते हैं उनको पता है कि आपके साथ कैसे डील करना है. एंड कुछ लोगों के लिए दरवाजा हमेशा बंद है, भाई आपका ग्राउंड रूल है. तो वैसे ही डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स. Okay, okay, okay. So अगर मैं बोलूं, so data privacy is sort of expectations how companies handle the users information, and data security is ensuring the protection from unauthorized access. Am I right? एब्सोल्युटली परफेक्ट. Good. So data security and data privacy दोनों अलग अलग होता है. In some cases overlapping हो सकता है, लेकिन both are different things. एग्जैक्टली वही सही बात है कि आपने किसी को कुछ सोच के दिया है कि भाई इसका तुम ये यूज करना, एंड अगर किसी और को दे रहे हो तो वो बता देना मुझे पहले. तो एग्जैक्टली प्राइवेसी एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, दैट कैसे डील Okay. करोगे मेरे डेटा के साथ, और मेरा परमिशन तो पक्का ले लेना, और जो जो बताया है बस वही करना उसके साथ. सो विवेक, क्योंकि हम स्टार्टअप के बारे में कर रहे हैं बातें, एंड वी कैन सी हाउ मच पॉपुलर शार्क टैंक इंडिया वाज. सो एक चीज बताओ, अगर अभी कोई स्टार्टअप शुरू हुआ है तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इन इश्यूज को कंसिडर करना? मैं इसको 2 पार्ट में सेग्रीगेट करूंगा, द लॉन्ग टर्म व्यू एंड द शॉर्ट टर्म व्यू. First, the short term view is Indian laws. The laws that you consider are inefficient are also providing penalties and compensation under their provisions. तो इससे फर्क नहीं पड़ता how small of a startup you are. It depends on ओके. what kind of data that you are handling. If the data is sensitive, अगर बैंक इंफॉर्मेशन है या फिर हेल्थ इंफॉर्मेशन है, so you are liable under the law. It's upon, मतलब आप ब्रीच होने की बस देरी है. एंड लॉन्ग टर्म व्यू में भाई मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा. पहला प्रिंसिपल होता है प्राइवेसी बाय डिजाइन. सो इफ यू आर बिल्डिंग अ चैट ऐप,
you should ensure that privacy of the app, I mean, privacy of customers on the app is protected from the first day that the product is launched. अब आप अपना चैट ऐप बना रहे हो, आप इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, इंक्रिप्शन जो भी है वो पहले से रखो. जीडीपीआर के अंदर प्राइवेसी बाय डिजाइन, आई मीन, is a principle of GDPR and you have to protect that principle. अब GDPR already enforce हो चुका है. So for some reason, if some startup is even in its early stage addressing the needs of people in Europe or European citizens, they are already under the radar of GDPR. GDPR can come and ask your products don't even ensure privacy by design. But for startups that are now in India, only focusing on India, a simple idea है कि अपने डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी प्राइवेसी बाय डिजाइन प्रिंसिपल है. Now, if your breach continues to the point when the data protection bill is enacted, up you will be held to be in breach of the new law, not the old law. Example, If yeah, you are running a faulty design since inception and you are not correcting it, तो अगर नया बिल जब इनेक्ट होगा तो आप उस बिल के अकॉर्डिंग आप आपको पनिश किया जाएगा. right, right, Am I right? राइट. Okay. सो दो केसेस ऑफ ब्रीच है. एक ब्रीच हुआ, आपका डेटा लीक हो गया, आपका बिल इनैक्ट हुआ है दिसंबर में, जाके जाके आपका डेटा ब्रीच हुआ है अक्टूबर में, तो आपको पनिशमेंट पुराने लॉ में मिलेगा. बट अगर आपका हम्म. ऐप फॉल्टी है एंड वो हम्म. फॉल्टी ऐप आपने लॉन्च कर दिया है मार्च में और वो हम्म. दिसंबर में भी वही फॉल्टी ऐप चल रहा है, सो यू आर वही लाइबल फॉल्टी अंडर द न्यू लॉ. एंड इसका एग्जांपल है डेफिनेटली. फेसबुक. सो फेसबुक राइट बिफोर द जीडीपीआर वाज इनैक्टेड, फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका जो स्कैंडल था उसमें द फाइन वाज हाँ. मियरली $500,000. एंड अभी आप देख लो छोटे छोटे ब्रीचेस में द फाइन इज ऑलमोस्ट 150 टाइम्स, इट इज ऑलमोस्ट 75 million. एंड ऑल्सो विवेक, अभी जो हमारा करंट आईटी एक्ट है और तब उसमें भी लॉ में एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो आते ही है एंड टर्म्स ऑफ यूज ऑफ एनी प्रोडक्ट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो इसलिए ही कहा जाता है कि डू व्हाट यू से एंड से व्हाट यू डू. Absolutely right, you have actually summarized it really well. So Vivek, every startup or every founder is actually care about the investment. क्योंकि वो कोई आइडिया पे काम करते हैं, इवन आइडिया सोचते हैं तो यही सोच के कि कल को उनको इन्वेस्टमेंट मिलेगा. So I believe this approach, this security pro approach, will be an additional point in their pitch to when they go for raising fund. So what do you think? I mean, even if the investors that come on board will know that the startup has other agendas to focus on, or they are in such a phase that they do not have a lot of capital. Lekin, I think a proactive approach towards privacy and security go a long way. And if they are tech startups and startups that use a lot of data, I think बहुत important होता है. And I'll also like to add some legalities over here, Ankit. So, like we talked about the laws in India and the upcoming laws. So, if, for example, a startup has created a database, a very valuable database, without consent of the information provider, अब उनका डेटाबेस ही इलीगल हो गया, लॉफुल नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो Hmm. कंसेंट लेना है. दे शुड ईदर टेक द कंसेंट और द यूज ऑफ डेटाबेस इज इलीगल. अब नेगोशिएशन के टाइम पे तो इन्वेस्टर विल बी लाइक द वैल्यू ऑफ योर स्टार्टअप इज आल्सो बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ योर डेटाबेस एंड आई डोंट सी वैल्यू इन इट Definitely. बिकॉज इट इज इलीगल. दूसरा है Hmm. भाई, अगर बात जाती है आपके इन्वेस्टमेंट तक कि वो इन्वेस्टमेंट देना ही चाहते हैं, they can impose conditions like, see, I have seen that there is a privacy breach or there is a very possible upcoming litigation against you, or I'm sure you are going to face these many fines or this much of penalty. तो वो बोल देंगे कि either we'll reduce the purchase consideration or they can make an escrow arrangement कि जब तक ये privacy gap fill नहीं करते हो तब तक we are not going to release the funds. We have also seen that there are covenants like, unless you fill the privacy gap, you cannot raise the next round of funding. So all of this is very problematic. सो डेफिनेटली इसकी वजह से नेगोशिएशन भी काफी होता है डिले, क्योंकि व्हेन द इन्वेस्टर फाइंड आउट यू आर नॉट compliant enough to take care of all the security breaches,
then they can ask for the heavy indemnity clauses, and even they can ask for the heavy representation and warranties. तो what do you think, ये फिर ये फीचर ये चीज भी उठेंगी अगर ऐसा कुछ कंपनी कर रही है लैग तो? बिल्कुल बिल्कुल, लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस विल कम दैट एक बार एक ब्रीच दिख गया तो वो बाकी रिप्रेजेंटेशंस मांगेंगे कि और कुछ ब्रीच नहीं है, आई हैव डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग, आई हैव नॉट रियली, माय वेंडर्स आर ऑल कंप्लायंट, आई हैव चेक्ड माय वेंडर्स प्रॉपर्ली, बहुत दे कैन आस्क फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, नेगोशिएशंस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आल्सो ड्यू एक सब। ड्यू यस। हाँ, ड्यू डिलीजेंस फिर क्या काफी ज्यादा लंबा टाइम लेगा, एंड काफी ज्यादा टाइम इसमें कंपनी का भी जाएगा, इन्वेस्टर्स का भी जाएगा, एंड इन दैट पीरियड इफ कंपनी हैज साइंड एक्सक्लूसिविटी क्लॉज, लाइक you cannot talk with some other person for raising fund, तुम किसी और से भी इन्वेस्टर से भी रेज नहीं कर पाओगे फंड, बिकॉज ड्यू डिलीजेंस चल रहा है तुम्हारा, टर्म शीट हैज बीन साइंड। सो ऑन एंड ऑल ये काफी नेगेटिव पॉइंट रहेगा कंपनी के लिए अगर वो इन सब इश्यूज को में लैग कर रही है तो। Also, if the deal falls because of these issues, हो सकता है आपके prospective investors भी आप पीछे हट जाएं। विवेक, मुझे एक एक चीज जाननी है, क्योंकि हम ये सब काफी डीप में जा रहे हैं, क्लॉज टर्म शीट, तो ये खाली बिगर स्टार्टअप्स या जो मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इन सिक्योरिटी ब्रीचेस को देखें, इन सिक्योरिटी इश्यूज एंड प्राइवेसी लॉस को करें फॉलो, या जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं अभी जिनका इतना मार्केट बेस नहीं है, या जो सीधे D2C में है, ये किस तरीके के स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या सिर्फ टेक स्टार्टअप्स के लिए है? Ankit, it is important for all startups because, as we discussed, the laws are agnostic towards your revenue or your overall turnover. But having said that, टेक स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि से यू आर अ SaaS कंपनी और यू प्रोवाइड सम क्लाउड सर्विसेज, तो आपके ऊपर अपने ऑब्लिगेशंस तो हैं ही फॉर द डेटाबेस दैट यू हैव कलेक्टेड ऑन योर ओन, उसका तो आप ऑब्लिगेशंस हैं ही, you also have some parts of obligations for the customer who's also a business. So if you are an Amazon Web Service or like a simple cloud service provider or some SaaS provider like Canva, uh, you also have the data of many businesses. So if any breach were to happen in your systems, the company is going to be affected. They are going to chase you. The severity and the onus actually increases many fold for tech startups and SaaS companies particularly. लेकिन स्मॉल स्टार्टअप्स हैं अगर जो टेक, पर्टिकुलरली टेक स्टार्टअप नहीं है, उनके लिए भी ये देखना जरूरी है। Right, right. तो विवेक, सुनने में ऐसा लग रहा है कि इन सबको टेक केयर करने के लिए एक अलग बजट, एक अलग टीम की जरूरत होगी, एंड दे आर सम स्मॉल बिजनेसेस, उनके लिए ये काफी टफ होगा। सो आर देयर एनी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन? So yes, Ankit, although it is a good idea to, I mean, have a dedicated team and a dedicated budget, but practically बहुत कुछ हो सकता है. So simple training will go a long way. If you inculcate an idea of privacy and security, you can ask your staff members never to write down passwords on chits and stick it on their laptop, or change their passwords every 1 month or every 2 weeks, or use two-factor authentication, never to talk about official matters or something that has confidential information about the company on WhatsApp. Signal use कर लो, उसके लिए पैसा नहीं लगता है, and buy some encryption software for important emails or important data that is lying around in your company. एक independent hacker को 3-4 महीने में एक बार hire कर लो, and bounty hunting assignments निकाल दो. ये एथिकल हैकर विल बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आपको एक एक अपना परमानेंट एम्प्लॉय भी रखने की जरूरत नहीं है, बस वंस इन 3 मंथ और 6 मंथ यू कैन चेक कि आपका सिस्टम कितना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कितना ज्यादा सिक्योर है। And assuming that tech startups have people that already understand tech more than we do, तो Yeah. ट्रेनिंग के बाद नए लॉ में there will be requirement for a data protection officer or a grievance officer
तो आगे चल के ये ट्रेंड एम्प्लॉइज उनमें से कोई एक इस पोजीशन पे भी जा सकता है. सो आई मीन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. एंड अभी जो करंट लॉ है वो ये अंडरस्टैंड करता है कि भाई ब्रीच हो सकता है. आप कितना भी कंप्लायंट हो जाओ, योर अटैकर इज गोइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ यू, गोइंग टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड. सो एटलीस्ट ट्राई टू शो अस दैट यू हैव टेकन ऑल स्टेप्स दैट वर पॉसिबल फ्रॉम योर एंड. आई थिंक ये चीपर नहीं है, ये तो खाली एक सॉर्ट ऑफ एक हैबिट बिल्डिंग है, दैट Yes, वी right. shouldn't make a cheat of our password and stick on the laptop. So it is a you know a process है कि हमको कितना ज्यादा सिक्योर रहना है अपने important informations के लिए. So everyone, we hope that we are able to convince you that data security and privacy issues are important for startups, and at least हमको एक culture develop करना चाहिए ताकि ये सब इश्यूज को हम लोग इजीली कैटर कर सकें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. So I think, just like Ankit said, थोड़ा तो कन्विंसिंग रहा होगा ये डिस्कशन. थोड़ा और कन्विंसिंग हो जाता अगर आप एक बार जाकर जीडीपीआर के अंदर फाइन का सेक्शन पढ़ लो, पेनल्टी का सेक्शन पढ़ लो, और अपकमिंग लॉज के अंदर भी थोड़ा पेनल्टी का सेक्शन पढ़ लो, फिर ज्यादा कन्विंसिंग हो जाएगा.